To get you updates with the highest court of our land, which has decided not to intervene in the survey of the Gyanvapi Masjid complex. The survey, which establishes without any doubt the presence of a Shivling-like structure in the wuzu khana, has not been stayed, despite the Muslim side questioning its validity. Now let's get you the big takeaways from the apex court's order. First takeaway, why the Supreme Court has refused to intervene. Now secondly, the Muslim side's plea that has been rejected. Thirdly, no stay on Gyanvapi Masjid that has been directed by the Supreme Court. Fourth, as far as the case has now been given to a seasoned and a more experienced district judge in Varanasi. And fifth, the interim arrangements that has been made by the Supreme Court stays even today. The 1991 law, the Places of Worship Act, also may not be a bar when it comes to determining its religious character. इतिहास बताता है कि जहाँ जहाँ हमारे आराध्य मंदिर थे वहाँ आक्रांताओं ने आकर के तोड़ के मस्जिद बनाई थी। वो भूल गए चिन्ह मिटाना। उनको लग रहा था कि अब हम ही यहाँ काबिज रहेंगे। और ये साफ जाहिर होता है कि मंदिर तोड़ करके उसके गवाह हैं नंदी भगवान, मुख उधरी को किए बैठे हुए हैं। जब आक्रांताओं ने तोड़ा था मंदिर, तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, तो हमारा भी अधिकार है लेने का। और उस पर कोर्ट बैठा हुआ है, कोर्ट फैसला करेगी। कोर्ट तो सबूत के आधार पर चलता है ना, और वहाँ सबूत मिल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये श्री राम जन्मभूमि की तरह काशी विश्वनाथ में भी न्याय होगा। मुसलमान जो पक्ष है वो अभी भी कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं है, एक फाउंटेन है। आज की उनकी आर्ग्यूमेंट भी इसी आधार पर थी। तो इसको लेकर आप क्या कहती हैं? देखिए, ये क्यों कह रहे हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप ही सोचिए, क्या किसी मंदिर में कोई फाउंटेन क्यों बनाएगा? वो तो अब पूरा प्रूफ भी हो रहा है कि वो मंदिर है, तो मंदिर में फाउंटेन का क्या काम? मंदिर की दीवारें देख लीजिए, ऐसा कौन जगह है जहाँ सबूत नहीं है? ऐसी कोई भी कोना नहीं है, ऐसा कोई भी दीवार नहीं है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आपको सबूत नहीं दिखेंगे। यह सत्य है, जैसे धार्मिक स्थल विधेयक 1947 के बाद यह ज्ञानवापी मस्जिद या मस्जिद नहीं आता, क्योंकि उसका एक लॉ है, क्लॉज है 23 ग के अनुसार ये है कि 1947 के पूर्व की जो स्थिति है, 100 साल पूर्व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, तो उस पर धार्मिक स्थल विधेयक लागू नहीं होता। जी सर, इसके अलावा एक बात ये भी है कि इसमें कोई वक्फ नहीं बनाया गया था, तो हाँ, तो उस पर आपका क्या कहना? ये वक्फ की संपत्ति ये होती है कि किसी व्यक्ति को कोई दान दिया हो या किसी के नाम किया गया हो। लेकिन औरंगजेब 8 अगस्त 1669 में हमारे देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर देवादिदेव काशीपुराधिपति मंदिर को ध्वस्त किया। को किसी ने दान नहीं दिया, वह जमीन किसी ने दान नहीं दिया और न कोई खरीदा गया। तो जब खरीदा नहीं गया तो वक्फ की संपत्ति आती नहीं, तो मस्जिद उसको कहा नहीं जाता है, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी के अंतर दी गई जमीन को ही मस्जिद कहा जाता है। तो यह पूर्णतः जो है। और दूसरी चीज, इन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी नहीं किया। हैरत की बात तो यह है, कभी आवेदन भी, हमने गहरा अध्ययन किया है, आज तक कभी आवेदन नहीं किया, इसलिए मस्जिद कहा नहीं जा सकता। ओके सर, इसके अलावा वहाँ पे ये भी जानकारी है, आपके पिटीशन में लिखा गया है कि एक पुराना पीपल का पेड़ भी था, जिसके आगे पीछे कई अन्य देवी देवताओं के भी पूजा पाठ होते थे, जिसकी तस्वीरें भी अब बाहर आ रही हैं। इनफैक्ट जो कल सर्वे की रिपोर्ट भी दी गई थी, उसके अंदर भी लिखा गया था कि कई मंत्रोच्चारण देखने को मिले, मंत्र लिखे हुए थे। तो इस पर आपकी क्या ये प्रतिक्रिया है? जो पीपल का पेड़ था काफी पुराना था, जर्जर था, वह टूट गया। जैसे जो एक इस नागर शैली के बने हुए मंदिर में 9 जो है 8 शिलाखंड जो है खंभे थे, जो है उनमें जैसे केदार था, जीवेश्वर ज्योति मंडप था, श्रृंगार मंडप था, है ना, इस मंडप हुआ करते थे। All right, so let's now listen to the other side as far as the masjid side is concerned, what they have to say, because they also have been claiming vindication as far as this hearing that happened in the Supreme Court yesterday. सुप्रीम कोर्ट ने इसे तस्लीम नहीं कर लिया है कि हाँ ये शिवलिंग ही है। कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया, अभी ज़ेर समाअत है और विचाराधीन है अभी कोर्ट में। इसलिए इतना तो हम ज़रूर कहेंगे कि जो सूरत हाल नई पैदा कर दी गई है, तो बस वो सूरत हाल पैदा कर दी गई, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो फव्वारा था और फव्वारा ही रहेगा।
अब उस हाउस के अंदर शिवलिंग होने का कहीं दूर दूर से भी कोई तस्वुर नहीं है, और जिन दावों की बुनियाद पर यह शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, बात कही जा रही है, उसमें भी कोई दम और हकीकत नहीं है। All right, let's get you live updates this morning with Nilashish and Shivani both joining us. Good morning to both of you. Nilashish, coming to you first, keeping as far as the complexity and the sensitivity of the matter is also concerned, the civil suit before the civil judge in Varanasi that now will be heard by a more senior and a seasoned judicial officer of the UP Judicial Service. That was the observation made by the Supreme Court yesterday. Well, absolutely. It was something that had been indicated by Justice Chandrachud right at the outset of the hearing. The complexity and the sensitivity of the matter was such that the Supreme Court felt that it was necessary not only to transfer the case to a more senior judge, but also to direct them to hear this matter on priority. So both these aspects were ordered by the Supreme Court, and the interim order for protection of the area where the Shivling has supposedly been found must also be protected by the DM. That order was also extended, and it was also, of course, in that order said that the people who wish to offer namaz must also be allowed to do so in that interim period. So the order clearly is trying to ensure that there's a smooth hearing in the in the Varanasi court, and in the next 8 weeks, it'll be very interesting to see how exactly this matter plays out before the Varanasi court. Right. What is of great significance is the observation passed by Justice Chandrachud, while he said that the ascertainment of religious character is not barred under Section 3 of the Places of Worship Act, and the Places of Worship Act is something that will form a crux of this particular case. So on that perspective, let me go across to Shivani now, because Shivani, both sides have now been claiming vindication of sorts, with the Hindu side saying that as far as the matter is, will continue. There's been no stay on the proceedings that has been ordered by court. The Muslim side has been claiming, saying that the Supreme Court has not accepted that structure that has been found in the wuzu khana as a shivling. Yes, definitely. In fact, both the sides are having their own statements, wherein the Hindu side is clearly claiming that it is shivling because, the survey report also mentions other parts which proves that there was a Hindu temple earlier before making of the mosque, and in fact, the work was also not being created by Aurangzeb and later by the, mosque committee. But also on the other side, the Muslim community in the mosque committee, they are also claiming that it is indeed fountain, and this is just a propaganda that has been created. But simultaneously, yesterday when we spoke to the petitioners also, they were also claiming that they were expecting some orders to come from the Supreme Court, since it is the highest top court in the country, so that everyone can follow that particular case. But a petitioner also mentioned that if Varanasi court also makes judgment, then it will be a difficult task for everyone to understand and accept, especially targeting it to the mosque committee. All right. For the moment, Shivani, thank you very much for joining in. Let's also, for a better understanding for our viewers, get you the legal tussle that surrounds the case, where Times Now will now show you what the Special Advocate Commissioner spotted at the Gyanvapi Masjid's basement, the very same masjid that was ordered by the court to be opened up, and that the survey to be conducted there as well. While these legal tussles will continue, we want to first of all tell our viewers what really was it that the surveyors have seen, what was in that 19-page report that was submitted by Vishal Singh, who was appointed as the Special Advocate Commissioner. Bit by bit, see what the surveyors saw. First of all, we will show you what happened in the basement. Now remember, there were 4 basements that were unlocked by the surveying team between May 13, 14 and 15. This was the first basement that they opened, and as soon as they entered this basement, 2 feet ahead, next to the door is a wall. This is what the survey said. Now, what did they see on this wall? They saw that 3 feet above the ground, there were motifs in the shape of palm leaves. They looked like flowers. Now, further, when you walk into this basement, there are pillars similar to these that are ancient pillars. There are 4 in number. They are 8 feet in height. They are
full of engravings of Hindu motifs. They go from bottom to the top and all the way around these pillars. These motifs include temple bells, they include kalash, there are also images of flowers. Now let's move on to the next one, which is the western wall of the mosque. What were the images that were seen here? There were an elephant idol with a broken trunk that was spotted over here. There was also a wall which showed trident, which is carried by Lord Shiva, very importantly, as well as swastika. Again, there were some more palm leaf shaped motifs on this western wall of Gyanvapi Mosque. There were temple bell motifs like these on the wall as well, which is very peculiar of a Hindu temple, and so is the architecture, which is the Nagara Shaili of temple making, which was very typical of northern Indian temple architecture at that point of time. Now, something that you would have never heard of before in this case, it is the domes and what the surveyors saw when they went inside them. Now, this mosque has three major domes, starting from the one in the north. The surveyors say when they went inside, what they saw was there were conical structures. They were 8 feet below the dome. They're the shikharas. The Indian Hindu temples have a conical triangular shaped structure on top, unlike the domes that are present in mosques. This is a feature that is also found in the central dome as well as in the dome on the next of it. All of them are 2.5 feet in height, all three of them, whether it is the north dome or the central dome or the south dome, and their base is 22 feet in diameter. What does it show? That there was a temple underneath, and it was on top of that temple that this mosque was built. It is an irrefutable proof that has been videographed by the surveyors and submitted in the court, and now forms the bedrock of the argument of the Hindu petitioner's side. But the Muslim side still says all this amounts to nothing. विशाल सिंह की रिपोर्ट, उसमें सबसे अहम जो बात कही गई है कि फव्वारे के नीचे शिवलिंग नुमा वैसी एक आकृति देखी गई है। क्या वो किस तरीके की आकृति थी? आपने जब फोटो कैप्चर किया था, देखिए, जिसको शिवलिंग और फव्वारे के बहस का बिंदु माना जा रहा है, वह काला चमकीले पत्थर से निर्मित आकृति है और प्रथम दृष्टया वह मुझे शिवलिंग लगा। और नीचे से मीडिया में जो चल रहा है, मोबाइल से खींचा हुआ पुराना वीडियो चल रहा है, उसमें नीचे तक रोशनी नहीं पहुंच पाई है, इसलिए उसका आकार नहीं दिख रहा है। उसका आकार एकदम सीधा साधा न होके पर्वतनुमा है, नीचे ज़्यादा चौड़ा है और ऊपर क्रमशः कम चौड़ा है, और काला चमकदार पत्थर का है, और बिल्कुल वैसा ही है जैसा वर्तमान में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर में जो लिंग है, बिल्कुल उसी तरह का काला चमकदार पत्थर का है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, ये काला चमकदार पत्थर बहुत महंगा होता है, और मैं भारत में बहुत जगह भ्रमण किया है मैंने, तो किसी भी फव्वारे में इस प्रकार के पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता है, सस्ते हल्के का उपयोग होता है। और कोई भी फव्वारा नॉर्मल जो पानी की सतह होती है उससे ऊपर होता है, और यह कम से कम पानी की सतह से 1 फीट ज़्यादा नीचे ये जो है अंदर डूबा हुआ था। मसलन इसको छुपा के रखने की व्यवस्था की गई थी। छुपा के रखने की व्यवस्था की, तो निश्चित तौर पे जो इशारा है वो आप समझ सकते हैं। ये बताइए कि जहाँ पर वो लिंग था उसके आसपास अर्घ्यनुमा एक कुछ बना हुआ था, और कहा जा रहा है कि उसके पानी की निकास की भी व्यवस्था होती है। जो हम लोग लिंग पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसके निकास की एक व्यवस्था होती है, तो क्या कुछ वहाँ भी ऐसा कुछ था क्या? देखिए, ये शिवलिंग जो है, ऐसा समझ में आता है कि जमीन से काफ़ी ऊपर सतह पे है, जैसे यहाँ तिलभांडेश्वर में है, जमीन से 12-15 फीट ऊपर पे है। तो यहाँ भी ऐसे समझ में आता है कि नीचे और लिंग है और अर्घा नीचे होगा। और मैंने पीछे की तरफ जब मैं जाके देखा तो जल निकास की एक व्यवस्था वहाँ पर दिखाई पड़ी थी, और वह निश्चित रूप से वजू खाने से कनेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि वजू खाने को साफ करने के लिए मशीनें लगाई गई थी, 2 मशीनें लगाई गई थी, पानी उससे सोख करके बाहर निकाला गया था। और वह ऐसी व्यवस्था थी, नीचे पत्थर लगा था, लगभग 1x1 का पत्थर लगा था, और उसमें वो छेद था और छेद से एक पाइप निकली थी, तो बाहर पानी निकलने की व्यवस्था थी।
और निश्चित लेकिन वो व्यवस्था वजू खाने की नहीं थी, बल्कि आपको ऐसा लगा कि वो जो व्यवस्था थी वो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है उससे निकलने को लेकर व्यवस्था, ऐसा कहा जा रहा है। अगर वो वजू खाने का पानी निकालने की व्यवस्था होती तो दो मशीनों की जरूरत न पड़ती, दो मशीनों से पानी बाहर न निकाला गया होता। तो निश्चित ही वो पानी निकासी की तो कुछ न कुछ व्यवस्था है और उसमें पत्थर भी लगा हुआ है। और यह बात सिर्फ और सिर्फ मैं अभी आपसे कह रहा हूं, मैंने पहले किसी से नहीं कहा है। All right, now let's get you updates on the political reactions that are coming in, especially of the AIMIM chief Owaisi expressing extreme disappointment with the Supreme Court's ruling in the Gyanvapi Masjid, saying he was expecting that the top court will nip the bud on the ongoing process. He also reiterated how the Places of Worship Act 1991 categorically states that it was to made ensure as far as future controversies over religious structures will not arise. My disappointment is on this issue that I was expecting that the Supreme Court will nip it in its bud, because this whole 91 Act categorically states that this act was made so that future controversies don't arise. So on that part, I was expecting the Supreme Court would nip it in its bud, because the lower court honorable judge was listening to one side of what the petitioners were coming and telling him. My disappointment is on this issue that I was expecting that the Supreme Court will nip it in its bud, because this whole 91 Act categorically states that this act was made so that future controversies don't arise. So on that part, I was expecting the Supreme Court would nip it in its bud, because the lower court honorable judge was listening to one side of what the petitioners were coming and telling him.